जय हिंद साथियों। आज कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस मैनिफेस्टो कहता क्या है, ये आप सबको जानना चाहिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो आप सबके लिए है और आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों में 42 लाख मैनिफेस्टोज डाउनलोड किए। यानी कि लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि आखिर इसमें क्या लिखा है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की बातों पर बिल्कुल मत जाइएगा, केवल वो देखिएगा जो आपके लाभ के लिए इसमें लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज रिटन इन द मैनिफेस्टो, लेट मी रीड इट आउट। कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों से क्या कर रही है? 60 सालों से जो समाज में जो पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं और जितनी जातियों का अधिकार है, ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनके हक अधिकार पर अपनी बात को बड़ी मुखरता से बोलते रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, दलित है, शोषित, वंचित है, उन सबको आगे लाया जाना चाहिए। आई एम सो ग्लैड टू सी यू जॉइन मी एट Chemba and Bendangmongba, and I am talking about the manifesto that the Congress Party has brought. And let me tell you that Mr. Modi is talking about our manifesto only, and because of what he's saying, people are very curious, and इसी कारण से ये manifesto लोग देख रहे हैं। और अगर मैनिफेस्टो को आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करना बड़ा आसान है। आप तो अब सर्च कर लीजिए, मोदी जी ने इतना मैनिफेस्टो की बात कर दी है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, ही स्पोकन सो मच अबाउट इट। बट लेट मी टेल यू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मैनिफेस्टो अंडर equity. Under equity basically means we are talking about equity for social justice. And how will this social justice happen? तो हम social justice के बारे में कह रहे हैं कि हमने हमेशा जो पिछड़े हैं, backward, oppressed classes, tribals, we fought for them for years, and therefore, when today we see that those people who belong to the OBCs, the SCs and STs combined together, there are 70%. So OBCs, SCs, Dalit और जो आदिवासी हैं, वो टोटल भारत के 70% लोग हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि उनको बेहतर रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, उनको अपॉर्चुनिटी कैसे मिले और उनको जितने बिजनेसेस हैं, सर्विसेज, सब में उनको आगे आने की का जो एक चांस है वो कैसे मिले। हाउ डू वी गिव देम दैट चांस? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड व्हाटएवर inequalities there are, we have to bridge them by bringing in certain programs. And what are those programs? कौन से कार्यक्रम है जो कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है? Everybody should know what we are talking about today. We are talking about सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय basically है क्या? When we talk about सामाजिक न्याय, then I will tell you each of the things that has been mentioned in the manifesto. पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। दूसरा बिंदु, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी, सो दैट यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। कांग्रेस शिक्षा, तीसरा पॉइंट, कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को मिलने वाली 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी। सो यू हैव हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और आपके वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, तो हॉरिजॉन्टली भी हम इस रिजर्वेशन को लेके जाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। पांचवा, कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भारतीयों की जगह नियमित भर्तियां करेगी। नो कॉन्ट्रैक्चुअल, अब आपको मिलेगा जो रेगुलर भर्ती है वो। इसके अलावा उनका नियमितीकरण भी होगा। रेगुलराइजेशन विल आल्सो हैपन। कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले
लोन की सीमा को बढ़ाएगी। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध अधिक मिले, इसके लिए सार्वजनिक खरीद का दायरा बढ़ाएगी। 9th पॉइंट, कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदायों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दुगना करेगी। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी। पीएचडी छात्रवृत्ति की संख्या दुगनी की जाएगी। 10वां, कांग्रेस गरीब छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का हर ब्लॉक तक विस्तार करेगी। मैं इन सभी चीजों को अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी बताऊंगी, पहले हिंदी में बताऊंगी, फिर इंग्लिश में बताऊंगी। So I will request all those people who are joining me to ensure that you spread the message so that more people can join in and they get to know what I'm talking about. मैंने 10 आपको बातें बताई जो सामाजिक न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस पार्टी ने, और वो करेगी। 11, कांग्रेस सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए समाज सुधारकों की जीवनी और उनके कार्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। 12वां, कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा परिचर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय स्थापित करेगी, लाइब्रेरी। 13, कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(5) के संदर्भ में एक कानून बनाएगी। 14, कांग्रेस वार्षिक बजट के अंतर्गत अनुसूचित जातीय उप योजना और जनजातीय उप योजना के लिए संसाधनों के आवंटन को अधिकृत करने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कानून पारित करेगी। 15, कांग्रेस मैला उठाने की कुप्रथा को खत्म करेगी। सभी मैला उठाने वालों को किसी दूसरे कार्य के लिए कुशल बनाया जाएगा, उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी, उनके लिए सम्मानित एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू किया जाएगा और हाथ से मैला उठाने के काम पर रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही मैला उठाने के काम के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवार को 30 लाख रुपए 30 लाख रुपीस का कॉम्पेंसेशन मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाली मशीनों को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करेगी, जिससे मानव अपशिष्टों को हटाया जा सके। सभी सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त सुनिश्चित किया जाएगा। 16, कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को सख्ती के साथ लागू करेगी। प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। ऐसे अत्याचारों के पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 17, कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बसाहटों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बहुसंख्यक है, लेकिन वर्तमान समय में वे अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है। 18, कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। इसके लिए विशेष बजट योजना और विभाग की स्थापना की जाएगी। 19, कांग्रेस 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित वन अधिकार दावों को निपटान सुनिश्चित करेगी और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया बनाएगी। 20, कांग्रेस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना के लिए राज्य पैसा अधिनियम के अनुरूप कानून बनाया जाए। 21 और 23 है 23। 21, कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में वंचित समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करेगी। 22, कांग्रेस रेन के आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी और विमुक्त और एवं घुमंतु जनजातियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। 23, कांग्रेस एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के संबंध में विविधता की स्थिति का आंकलन करेगी और बढ़ावा देगी। So what I have spoken about just now is about social justice, equity, and therefore I will now talk about this in English because the Congress Party has always been equal and in the forefront and has always championed the progress of the backward, the oppressed classes in the last 7 decades, where 7 decades whenever we've been in power and when we have not been in power. This message has to reach people because it is important for people to know
that the SC, the ST, the OBC communities who have been left behind and have not been able to catch up with the development in the country today. We are talking about them. OBC, SC, and ST constitute nearly 70% of the population of the country. But their representation is not equitable as compared to their population. So uh, there is reason to believe that this has to be bridged, this gap has to be bridged. And how will we bridge it? There are 23 points in the Congress manifesto regarding this. The Congress manifesto is called Nyay Patra Nyay Ka Sankalp, which literally translated means justice, a letter of justice, which is a resolve for justice. The first point, Congress will conduct a nationwide socio-economic and caste census to enumerate the caste and subcaste and the socio-economic conditions. Based on this data, we will strengthen the agenda for affirmative action, so that we can take this forward and make sure that people get opportunities according to their population. Second, the Congress guarantees that it will pass a constitutional amendment to raise the 50% cap on reservations for SC, ST, and OBC. Third, the reservation of 10% in jobs and educational institutions for economically weaker sections, the EWS, will be implemented for all castes and communities without discrimination. Fourth point, we will fill all the backlog vacancies in posts reserved for SC, ST, and OBC within a period of 1 year. Fifth, Congress will abolish the contractualization of regular jobs in the government and public sector enterprises and ensure regularization of each of such appointments, meaning the contractual nature will have to go and we will have regular jobs, and that is what is troubling the BJP. The sixth point, we will enhance institutional credit to SC and ST for home building, starting businesses, and purchasing assets. That means for scheduled castes and scheduled tribes, institutional credit will be enhanced so that they can build their homes, they can start businesses, and they can purchase assets. Seventh point, Congress will establish an authority to monitor the distribution to the poor of government land and surplus land under the Land Ceilings Act. We are talking about government land and the land which has come under the Land Ceilings Act, that will be given to the poor so that they can utilize it and they can better their situation. That is what we are talking about. Whereas Narendra Modi is is literally twisting facts. Whatever I just told you, that for the scheduled castes and scheduled tribes, we will ensure that there will be an authority which will monitor the distribution to the poor of government land and surplus land under the Land Ceilings Act. What is Mr. Modi saying? That we will take away land or we will take away property of yours and then distribute it to those who don't have it. But he is targeting one community, and that is the Muslims, which is not written here. I've told you clearly what we have said about the scheduled caste and the scheduled tribes. The scope of the eighth point, the scope of the public procurement policy will be expanded to award more public work contracts to contractors belonging to scheduled caste and scheduled tribe communities. So the scheduled caste and scheduled tribe communities will get more opportunity to work in the public procurement under the public procurement policy, so that they will be getting more public works contracts so that they can do better work, they can get work more easily also. So that opportunity will be given. Ninth, funds for scholarships for OBC and SC and ST students will be doubled. Scholarships for OBC, SC, and ST will be doubled. Especially for higher education, we will aid scheduled caste and scheduled tribe students to study abroad and will double the number of scholarships for them to pursue a PhD. 10th point, Congress will establish a network of residential schools for the poor, especially scheduled caste and scheduled tribe students, and extend them to every block. So we will be starting residential schools and we will try to extend them to every block. 11.
We will include the curriculum of schools, the in the curriculum of schools, the life and work of social reformers to spread the message of social justice so that everybody understands what social justice is, so that when we study about them, we will learn about it. 12th, we will establish Ambedkar Bhavans, come libraries in every district to promote the habit of reading and discussion. So we will start more libraries. Uh, 13th point. And what will the libraries be called? Ambedkar Bhavans come libraries. So you will have Ambedkar Bhavans also, and you will have libraries. And the association with the Ambedkar Bhavan clearly shows what the Constitution means to us, which the BJP does not want in existence. It wants to wipe it away. It wants to change the Constitution. We have to fight for it. 13th point, under social justices, we will enact a law with reference to Article 15.5 of the Constitution to provide for reservation in private educational institutions for scheduled castes and scheduled tribes, and also OBCs. So scheduled castes, scheduled tribes, and OBCs really need reservation in private educational institutions so that they have the platform, the opportunity, and then from there, once they get educated, they can take a part in the development program of the country, take the country forward as far as development is concerned, and they will also take their communities forward as they take themselves forward. 14th point, we will pass a law authorizing allocation of resources for the scheduled caste sub-plan and tribal sub-plan. For the scheduled caste, you know that you have a caste, scheduled caste, you have a sub-plan, and for tribals, you have a sub-plan also. So we will be trying to, we will do what? We will pass a law which authorizes allocation of resources for the scheduled caste sub-plan and the tribal sub-plan within the annual budget and monitoring the execution of the plans. It will be monitored also whether it's happening or not. 15th point, Congress will end the evil of manual scavenging. Every manual scavenger will be rehabilitated, reskilled, provided a job, and assured a life of dignity and safety. The Prohibition of Manual Scavenging Act 2013 will be strictly implemented. So we brought it in 2013. And this will be strictly implemented, and any person employing anyone for manual scavenging shall be punished. We will also provide compensation of 30 lakh rupees to families of sanitation workers or Safai Karmcharis, as they are called, uh, if if something happens to them, deceased while at work. We will allocate sufficient funds to enable the procurement of machines that will clean sewers and septic tanks and remove human waste. Free insurance will be provided to all sanitation workers. Those are 15 points under social justice. And there are still more. Yes, there are 8 more. So 16. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 will be enforced diligently. A helpline will be established in every state's capital, and legal aid and paralegal support will be provided to the victims of such atrocities. 17th point. Congress is committed to notify as scheduled area all habitations or groups of habitations where scheduled tribes or STs are the largest social group. Those will be uh, identified and then notified as scheduled area outside the present scheduled areas in all states and union territories. So whatever is already there, that is there, but we will check from all other places also where it's not there and try to identify these places and declare them as scheduled areas. 18th point, a national mission will be set up for effective implementation of the Forest Rights Act 2006 through a dedicated FRA division, a separate budget and action plans. 19. The Congress will ensure settlement of all pending FRA claims within 1 year and establish a process for review of all rejected claims within 6 months. Congress is committed to ensure that states enact laws in conformity with the framework of the Central Panchayats Extension to Scheduled Areas Act 1996, PESA, to establish, this is Panchayats Extension to Scheduled Areas, PESA,
to establish village council and autonomous district council as envisaged in PESA. 21st, we will enact the Rohit Vemula Act to address discrimination faced by students belonging to the backward and um, oppressed communities in educational institutions. So we will enact a law called the Rohit Vemula Act so that discrimination faced by students like Rohit Vemula, is not repeated. 22nd, we will implement the recommendation of the Renki Commission. We will provide free education for children belonging to the nomadic tribes, the Gumantu uh, tribes, and denotified tribes. 23rd, Congress will establish a diversity commission that will measure, monitor, and promote diversity in public and private employment and education. Nowhere is your land uh, taken away from you and given away. This is politics. Mr. Modi is doing it. Well, so be it. Let him do that. The fact is that today we are fighting for our democracy, and people need to be more educated. So tell all your friends and tell them that we will save our democracy. Yes, why is ECI silent? You asked me. Cute puppy reels. Yes, it didn't reach people. I am sorry if it didn't reach, but this is the only way to make sure that it reaches, because the debates are all about Hindu, Muslim, in India, Pakistan, Hindustan, Pakistan, Shamshan, Kabristan. You know how it is. So let's talk about what is necessary. Tichum Naga says, why ECI is silent, why Modi is not taking action according to the model code of conduct regarding hatred against religions, which are not acceptance chanting Jai Shri Ram for food bank. Uh, this is the culture of the BJP, and especially Mr. Modi. He knows that if free and fair elections are allowed, people will not get polarized. He will not be elected. His only job is get elected and then do drama and all that. That's all that he's fighting elections for, and it's just a facade because we know how the systems are working for him. Yes. And Maruf Patel ji is saying, ma'am, you're telling right. Please tell other people also about it. Share this video. Let them see this. If the India bloc came to power in the center, will Rio be investigated? And if in the state, will it be alliance with the India? Is there any possibility? Right now, the point is about saving the country. So let's see what happens if at the center, you know very well, if the India bloc comes, or that even if elections are over in Nagaland, I hope that you will spread the message, because the message can go to you. It can go through any forum, right? So if you can contribute in that, it will be great. BJP is the disaster of democracy, of course. And of course, we have somebody from, yes, Nasir. It is something that is happening within our country, but it's not like it's not a secular. 60% of the people did not vote for Mr. Modi. So we are a secular country. In fact, uh, even if you say 37%, then 61% did vote for it. Of course, the votes got divided. We are a secular country. We will save our democracy. It could be a long fight, but we are here to fight for it. Yes. So that's what I would like to say. Share this video so that more people come to know about social justice, which is given in our manifesto. I will talk about other things which are there in the manifesto as we go along. Please share them so that people get to know what we are talking about. What we are talking about, religious and linguistic minorities, because everything is twisted only for the sake of election, which is not safe for the country. I will see you again. Goodbye, and do keep sharing the videos so that we make more people aware, so that we can save our country. Good night.